I believe a lot of individuals face productivity crisis in their life, just because of digital world. We're scrolling out, we're watching a lot of content which is useless, which is mindless consumption. तो उस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई. इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में भी नोट किया एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट कि बिकॉज आई डू पॉडकास्ट, आई डू अ लॉट ऑफ डिजिटल स्टाफ, आई रन अ डिजिटल एजेंसी प्लस अ ट्रेनिंग कंपनी. सो कहीं ना कहीं डिजिटल कंजम्पशन करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, उसकी वजह से मेरा इंटेलेक्ट, मेरा खुद का रीडिंग स्किल डिक्लाइन हुआ है. And I don't like that part because I used to read a lot. I used to understand that I should learn more. A lot of individuals face productivity crisis because of this. So what do you advise? We should learn how to disconnect and we should practice the art of disconnecting. और उसका एक बहुत बेसिक ब्रेन साइंस फैक्ट है कि आप मल्टीटास्किंग, स्विच टास्किंग वो होता है कि जब आप मल्टीटास्किंग व्हेन यू आर डूइंग multiple tasks at the same time, and switch tasking is when you're switching between tasks. आप Instagram देख रहे हैं, आपने रखा, अब आप कुछ और करना शुरू हो गया, आप email लिखना शुरू हो गया. Both of these have a huge negative impact on your brain परफॉर्मेंस. और जब आपका ब्रेन की परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कम होगी, तो आप प्रोडक्टिव नहीं रह सकते. तो जब हम एक बेसिक फैक्ट समझ जाएं कि हम रेस्ट इज़ नॉट अ लग्जरी और रेस्ट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ अ मॉडर्न concept, it is a essential part of our lives. Probably need definitely as essential as the food that you put in your body. We don't skip meals, but we skip the attention to our cognitive health. So my advice is practice the art of switching off, disconnecting, whatever that takes. You come home, switch your phone. When I'm done with work, I put my phone on flight mode for hours. I don't that attraction is not even there. Put it in a drawer. Let an email go out that this is a boundary I'm setting. I'm not going to be sending emails out post 5 p.m. or 6 p.m. Don't work on weekends, but disconnect. And disconnecting also means all digital devices. Connect with sports, connect with walks, connect with books, like you said. So yeah, it's as simple as that.